बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो फर्स्ट ज़ूलॉजी न्यू बुक के हवाले से उसका गेस्ट पेपर रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस किस हवाले से है। मैं बताते चलूँ कि फर्स्ट ईयर का ज़ूलॉजी का गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मज़ीद आप इस वीडियो को भी ऐड कर लें ताकि आपके सामने तमाम रीजनिंग और नॉन रीजनिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएं। तो आज की वीडियो जो है वो रीजनिंग नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस के हवाले से सब है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, मैंने वैसे तो गेस्ट पेपर में भी बताया है लेकिन यहाँ भी बता दूँ कि गेस्ट पेपर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9-10 के तमाम सब्जेक्ट और फैकल्टीज़ के इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करूँगा। कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ जो बताने की अहम बात है वो ये है कि मेरे गेस्ट पेपर के साथ 4 कोचिंग सेंटर के कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस के पेपर ज़रूर नज़र में रखें। उनमें प्रैक्टिकल सेंटर, आदम जी, अनीस हुसैन और न्यूटन इन 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो आलमोस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इंशाल्लाह लास्ट में जब वो आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर भी अपलोड होंगे, तो उससे आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें। यहाँ हम रीजनिंग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग क्वेश्चन में नंबर 1 आपके पास है, वाई एस ए नोड इज कॉल्ड नेचुरल पेस मेकर ऑफ द अर्थ of the heart. Why protostomes and endocytomes are named so? What is antipyretic therapy and why it is used? How natural killer cells are different from cytotoxic cells? How humoral immunity is different from cell-mediated immunity? How animals are classified on the basis of xylem, why rate of breathing increased in human, how gases exchange take place in alveoli sacs, why breathing in human is called negative pressure breathing, what is MHC and how it work as identity card of cell, how temperature play a role in immune system, what is the role of hemoglobin as respiratory pigment, what is anomalous behavior of water, why water molecule is amphoteric in nature, why amino acids are so called, how saturated acyl glycerol is different from unsaturated, why enzymes are called temperature sensitive, why enzymes are specific in nature, how bile help in digestion of fats and neutralization of food, how the surface area of internal small intestine is increased, how food is absorbed in small intestine, how stomach protect itself from strong HCl, why capillaries are provided with single layer of endothelium, why blood flows faster in arteries than veins. नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास व्हाट इज phagocytosis, write the name and function of WBC acting as phagocytes, write the homeostatic functions of liver, write the evolutionary adaptations of phylum Cnidaria, ठीक है। write a note on saliva and salivary glands or teeth in man, write down the steps involved in holozoic nutrition, write a note on lymphocytes and its types, write the difference between tube-like and sac-like digestion system, what do you know about basic fundamental chordate characters, sure. What are the main functions of respiratory system? What are the characteristics of respiratory surface? Write the difference between bony fish and cartilaginous fish. Write a note on pneumonia or lung cancer. ठीक है। How residual
volume of lungs increase. How animals are classified on the basis of tissue layer or symmetry. What do you know about active immunity and passive immunity? What is inflammatory response? What is systemic and pulmonary circulation? Write the process of digestion on amoeba. How animals are classified on the basis of symmetry. What do you know about condensation reaction or hydrolysis? What is the role of stereoisomers as artificial sweeteners? Write a note on conjugated molecules. Write a note on RNA and its types. Write down the significance of amino acids in protein synthesis. What is competitive and non-competitive inhibition? Relate hepatitis and jaundice with the function of liver. Define terpenes and steroids. What is cell mediated and humoral immunity? तो ये थे आपके रीजनिंग नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस जोलॉजी फर्स्ट ईयर के हवाले से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।